ऑब्जेक्टिव होता है हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेस। अगर वो नहीं है कोचिंग में तो सबसे क्रूशियल एलिमेंट कोचिंग का है ही नहीं। मान लीजिए कि आपने कहा मेंस में टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन चेक होते हैं, आपके किसी क्वेश्चन में 4 नंबर दे दिए उन्होंने, है ना, वो तो इवैल्यूएशन हुआ, बट हाउ टू मेक इट 6 होता है दैट इज एक इंस्टीट्यूट में अगर वो नहीं है कोचिंग में तो सबसे क्रूशियल एलिमेंट कोचिंग का ही नहीं दे रहे हो। मान लीजिए कि अगर उनमें से मेंस में 10% भी पास होते हैं तो यूपीएससी का नॉर्मल है 4 नंबर दे दिए उन्होंने। तो एक्चुअली जो है जहाँ तक नॉलेज होता है, नॉलेज दैट इज कोई भी प्रोवाइड एक इंसान आपके यहाँ के बुक्स हैं, अगर वो नहीं है कोचिंग में बट नॉलेज और लर्निंग इट इज बेसिक। मान लीजिए अगर उनमें में 10% भी पास होते हैं तो यूपीएससी का नॉर्मल है 4 नंबर पास। तो एक्चुअली जो है जहाँ तक नॉलेज होता है, नॉलेज दैट इज कोई भी प्रोवाइड एक इंसान आपके यहाँ के बुक्स हैं, अगर वो नहीं है कोचिंग में बट नॉलेज और लर्निंग मान लीजिए अगर उनमें 10% भी पास है Sir used to share a lot of articles on WhatsApp group पे जो भी current affairs के articles हैं, जो भी research के articles हैं, sir used to share. So what it made a difference कि सबको I think everyone मान लीजिए अगर उनमें 10% भी पास है Sir used to share a lot of articles on WhatsApp group पे जो भी current affairs के articles हैं, जो भी research के articles is thorough with the syllabus, उनको पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है. But value addition, no, there is a difference when you see my answers and compare my answers with the other people. उसमें जो value addition वाली चीजें हैं, that comes from whatever sir was sharing in WhatsApp group. कोचिंग का सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेस। अगर वो नहीं है कोचिंग में तो सबसे क्रूशियल एलिमेंट कोचिंग का है ही नहीं। मान लीजिए कि आपने कहा मेंस में टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन चेक होते हैं, आपके किसी क्वेश्चन में 4 नंबर दे दिए उन्होंने, है ना, वो तो इवैल्यूएशन हुआ, बट हाउ टू मेक इट 6 दैट इज कोचिंग। तो एक इंस्टीट्यूट में जनरल स्टडीज के कम से कम 600, 700, 800 बच्चे मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं। अगर उनमें से 10% भी पास होते हैं तो यूपीएससी का नॉर्मल है 10% पास होना। तो एक्चुअली जो है जहाँ तक नॉलेज प्रोवाइड करने की बात है, नॉलेज तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, आपके यहाँ के बुक सेलर्स तक आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट नॉलेज और लर्निंग इट इज द फर्स्ट स्टेज। बेसिक जो है हाउ विल यू इम्प्रूव।
How do you know? Because I have seen his classes. But they claim results n number of times more than we have. Just for the interview, they might have played. I did not. What about next वाले? आप भी कोचिंग कर रहे हैं? दृष्टि सेम. But why? I want someone who have better experience in this field. Experience matters. Knowledge does not. Knowledge matters, but experience will provide us an easy path to conquer this. आप लोग करें? ये माइक क्या सामने कर रहे हैं कहीं? नहीं? You know, two things at a time will be very difficult. Like if you are, the way I would suggest is, class is 2.5 hours. My classes have been Completed. Understand? 2.5 hours. So what you got to do is that after the class you come back, convert everything into points. Whatever additional sources you have to look at, add into those and remember by heart. That will be the way. Otherwise, if you are just attending classes, that is meaningless. You can attend those even on Telegram. So you can save your time also and money also. So if you are devoting that much time to general studies, do you think you will have time for Anthro also? You know what we expect, that because subject is new, before coming to the class, you should go through, you already know the topic, and visit at least twice. And whatever doubts you have, plenty of doubts would be there because subject is, then you put all your doubts in my WhatsApp number. So most of the doubts would be cleared during the lecture itself. If there is some additional one, that we discuss. After the class, go back, read again what you had read, and also read your class notes and write at least one answer and read for the next day. So where is the time left for general studies? How will you do it? How will you manage? माइक पकड़ो, जवाब दो ना. I completed my around. I have completed 2 or 3 subjects in GS. And it's become very hectic for me to balance each subject. This is what I'm telling you. So how will you manage? And you have must have kept a target for 25. Yes, How will you manage? that's why I'm here. That's why. That's why I'm here No, for. see, issue is time management. Every competition, more so civil services, it is a game of time management. How you manage your time? You started your preparation just now. There are many others who started last year or last to last year, and you have to compete with them. And even if you devote all your time in reading, but you do not remember anything, that is just meaningless. बहुत सारे लोग आते हैं, सर 3 रीडिंग दे दिया, 4 रीडिंग दे दिया. अरे कितनी रीडिंग चाहिए? 10 रीडिंग भी दे दोगे तब भी तैयारी नहीं होगी. टॉपर्स भी बोलते हैं 7-8 रीडिंग तो चाहिए. क्यों चाहिए? Read it, read again, convert into points and remember. That's all. One thing always remember, टॉप 20 में एटलीस्ट 8 लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां जो फर्स्ट टाइमर होते हैं. कैसे हो जाते हैं वो? UPSC is not interested in what you have read and how many times. Issue is what will be your performance in those 3 hours, and that will depend on how much you have retained. तो फिर कैसे करोगे? And also wherever you have GS also, do you have mechanism for evaluation? Evaluation होती है, आंसर्स लिखते हो? नहीं? Who evaluates? Some of them are my students.
and none of them has appeared in prelims even, and they evaluate your mains answers. Evaluation should be by the person who is coaching you, but he doesn't have time. So, coaching simply means how to improve your chances of success. I am seeing the ads, the best institute. Everybody is claiming best, we never did. The best faculty. Issue should be result. How many candidates were there in your classroom? How many of them appeared? What is the pass percentage? They never talk about. They talk about only the topper. And whenever a topper is there, 10 to 15 institutes they claim him. How many coachings he or she had? Okay, no? We always advise our students that if you have to appear in 25, by 31st of January 25, you should be ready with your mains. Ready means ready. Ready means in a way that tomorrow is the exam and during the night you can revise the whole thing. That should be the way. But if you cannot, you postpone your attempt. Otherwise, what happens? You have already decided that you will appear in 25. You do not know what UPSC is all about. You do not know how much preparation is required. You have fixed up a target. Hmm? I told you by 31st of January you should be ready with your mains. You are not. But then is the time to prepare prelims. So 3 to 4 months at least. If first attempt is there, you have to give 4 months. Without mains, take it from me. It's very, very, very difficult to qualify through the prelims. If you are not prepared for the mains, obviously you will not. But let us say you qualify. Definitely you will fail in mains. And again you will start preparing mains. Let us say you didn't prepare and you failed in prelims, you will start preparing for the mains. And again in 26 you will start preparing for the prelims. So how will you include those February, March, April, May 25 in your lifetime achievements? Chitragupta ji, how will they write in your life what you were doing in these 4 months? The 4 months which resulted in failure? If you qualify through the prelims, that will be more dangerous. Because if I told you qualifying mains would be literally impossible. So you will fail through the mains. Then comes the time for prelims preparation. Again you prepare the prelims, again you qualify, again you don't have time for mains. And ultimately you will exhaust your attempts and then you will blame the luck. या मेहनत तो बहुत की थी, किस्मत अच्छी नहीं थी. This is not luck. It is part of your strategy. You didn't make a strategy for that. ठीक है ना? Sir, it's 2 o'clock. We can start formally. Should we start formally? The students who have joined us on Zoom, I request you to switch on your cameras, make this session as interactive as possible. Those who are watching on YouTube, if you wish to have an interactive session, there's the link to Zoom meeting is there in the pinned comment. You can join from there. Okay. And those who have not taken their bath, they may keep their camera off. But they must tell at least that नहा के नहीं आए इसलिए कैमरा बंद किया हुआ. Shall I play that video? कौन सा? अभी चल रहा है. हाँ, I wish that आप लोगों ने तो you have seen that online people is a 3-minute video. Antim sir has prepared this one. I wish you have a look before we start. But be sure, keep your doubts, your queries, your question in mind that you have to ask. ठीक है? तो इसको देख के फिर 3 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं.
सब में कोचिंग का सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेस। अगर वो नहीं है कोचिंग में तो सबसे क्रूशियल एलिमेंट कोचिंग का है ही नहीं फिर। मान लीजिए कि आपने कहा मेंस में टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन चेक होते हैं, आपके किसी क्वेश्चन में 4 नंबर दे दिए उन्होंने, है ना, वो तो इवेल्युएशन हुआ, बट हाउ टू मेक इट 6, दैट इज कोचिंग। तो एक इंस्टीट्यूट में जनरल स्टडीज के कम से कम 600, 700, 800 बच्चे मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं। अगर उनमें से 10% भी पास होते हैं तो यूपीएससी का नॉर्मल है 10% पास होना। तो एक्चुअली जो है, जहां तक नॉलेज प्रोवाइड करने की बात है, नॉलेज तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। आपके यहाँ के बुक सेलर तक आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट नॉलेज और लर्निंग इट इज द फर्स्ट स्टेज। बेसिक जो है, हाउ विल यू इम्प्रूव। व्हाट्सएप ग्रुप May I know the background? How many are engineers? Only one. ऐसे कैसे हो गया भाई ऑनलाइन बच्चों में? यार वो हाँ ऐसे करके जो होता है बस। What's your background? Zoology. पढ़े? जनरल बायो साइंसेस। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। देखो मैथ्स आई थिंक very dangerous subject. Most crucial, though, in general, the kind of background that you have, you will require to improvise your English. But people with maths, definitely, they have to work very hard. Because in maths, you don't write English. Everything else you write. So you have to practice a lot about, because it is a journalistic exam. Writing skills are tested a lot, particularly in essay and ethics, and to an extent in paper 2 of optionals also in social sciences. Even those who have background in bio also, they also have to work hard. Basically, civil services are meant for arts people. We don't find many people with arts background. So from where to start? Choice is yours. Who told you to become IAS? क्यों आकाशवाणी हुई थी? Got to be some reason, some experience, something of a sort that. क्योंकि आईएएस का मतलब पता है क्या होता है? आईएएस का मतलब होता है आई एम सॉरी, कोई काम धाम नहीं करते। फाइल आएगी, गुग्गी मार के ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर से आएगी गुग्गी मार के नीचे पहुंचा दिया। यू गो फॉर एनी वर्क, दिल से इधर आ जाओ यार, कम नियर, इधर आ जाओ, कम नियर, दिल से आई एम सॉरी। फिर क्यों बनना चाहते हो? बताओ। They'll ask you in interview also. That will be one of the important questions they'll ask you. You already have so many IAS. We want to add another head to that. आगे आ जाओ, come forward. चलो आगे आ जाओ और आगे। I'll again request my friends who are joining from Zoom, please switch on your cameras.
भाई जिनको कैमरा ऑन नहीं करना है वो घर बैठ जाएं। मैं भी कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा ना। या हिजाब ओढ़ लें या बुर्का ओढ़ लें, कुछ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इंटरव्यू में भी ऐसे ही चले जाना। Class, if you want to join class, the first rule of class is that you have to keep your camera on. तो अभी से वो कैमरा ऑन नहीं करोगे तो फिर तब भी क्यों करोगे। हाँ चलो बताओ, व्हाई यू वांट टू बी आईएएस। नहीं बताना चाहते। We have a tradition that we should not speak in front of our elders. Are you following that tradition? I'm asking you. नहीं बोलना, कट्टी है। Then आप बताइए। और you want to serve the nation, you join some NGO. सर एक्चुअली हमारे पॉलिटी में सजेस्ट किया थी विदाउट पावर। हाँ तो फिर पावर की बात करो ना, सीधा सीधा जी। है। सर्व द नेशन क्या बात है। तो बट पावर के साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। जी। See, your age, the age you have, discipline cannot be imposed from outside. So if you feel responsibility, you are responsible. If you don't, you are not. So there is an opportunity for better subordination. कैसे? एक चौथी पास मिनिस्टर आके तो झाड़ देता है ये इसको। फिर लालू जी जो हैं वो आईएएस को बड़े बाबू कहा करते थे। तो चलो इंटरव्यू की बात तब होगी, पहले ये बताओ एंथ्रो क्यों लेना चाह रहे हो। बायो वालों का तो चलो वो एक पोर्शन, व्हाट अबाउट द रेस्ट। Sir, maybe not all are decided on the optional as well. वैसे भी हो सकता है, इन्होंने नहीं किया वो बताते नहीं किया रिजल्ट। यू डिड योर ग्रेजुएशन व्हेन and what are you doing thereafter? I was not sure about the coaching, so then I tried to read some GS on my own, but I couldn't do it regularly, like discipline नहीं करना था. So I joined coaching to get regular. आप लोग have you joined any classes for general studies? नहीं नहीं, only so. What's your background? Science means all of you. BCom. Why should you take Anthro? चलो उनका तो मेडिकल थोड़ा रिलेटेड है, वो बायो वाले हैं उनका रिलेटेड है। दी मैथ्स पीपल आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। कोई रीजन तो बताओ, बताओ। सर एक्चुअली मेडिकल में शुरू से इंटरेस्ट था, बट लैक ऑफ अवेयरनेस थी उस टाइम पे, तो मतलब बीकॉम रखा। तो अब ये है कि मतलब एंथ्रो का थोड़ा सिलेबस थोड़ा आइडेंटिफाई किया, तो उसकी थोड़ी क्लासेस आगे पीछे से थोड़ी सी देखी, तो मतलब एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। ऐसे तो शुरू में सब तो कोई और सब्जेक्ट देखते उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता। सर ऐसे तो मतलब शुरू में सभी कहते हैं कि मतलब स्कोरिंग है, तो उसको देख के हम उसमें आगे। See, if Anthro were scoring, then either everybody would be taking Anthro, or all those people who amongst all the results, Anthro should be clearly get distinction. And let me tell you one thing, result of Anthro is declining. पता है आप लोगों को? कैसे पता है? क्यों कम हो रहा है? रेट ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। देखो ऐसे है, मान लीजिए लेटर से कि यूपीएससी का रिजल्ट जो है उनकी जो लिस्ट आती है इट कम्स 2 years लेटर। अभी 20 की होगी शायद या 21 की होगी। लेटर से इन 1890 यू हैड 1000 कैंडिडेट्स, लेटर से, एंड लेटर से 120 क्वालिफाइड, मीन्स 12% रिजल्ट। लास्ट ईयर मोस्ट लाइकली इट विल बी 2000, तो 240 थोड़ी पास होंगे। It would hardly be say 160.
or at the best 180. The reason is, as the subject becomes popular, non-serious candidates, they literally throng. या इसमें नंबर बहुत आते हैं क्यों? यूपीएससी ने क्या कोई चैरिटी होम खोल रखा है एंथ्रो के लिए? नंबर आते हैं, यू हैव टू स्कोर. ठीक है? एंड हाउ कैन यू रियलाइज यू कैन स्कोर? आई टोल्ड यू ओनली वे आउट इज राइट आंसर्स get evaluated. Once it is final, mark it up. During the classes, we practice something around about 250 answers. एग्जाम में मान के चलिए कि एक आध क्वेश्चन को छोड़ के मोस्ट ऑफ देम आर दीज ओनली. अगर आपने याद नहीं किया वेदर इट इज जीएस और एंथ्रो, आपकी स्पीड वहां बहुत कम होगी. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन द एग्जाम इटसेल्फ, आई डाउट वेदर यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 3.5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5. सो अगर आप 70% अटेम्प्ट करेंगे तो लेट अस से यू गेट द बेस्ट स्कोर, मींस 70%. सो यू आर गेटिंग 70% ऑफ 70% मींस 49%. तो आप जब आंसर लिखते हैं डांट तो बहुत पड़ती है. यू हैव टू इम्प्रोवाइज बिकॉज सब्जेक्ट इज न्यू. बट वंस इट इज फाइनल, व्हेन आई से फाइनल मींस एटलीस्ट वर्थ 60%, तो स्कोर अपने आप आएगा. तो बेसिक एक्चुअली सोशल साइंसेज में देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑन योर ओन. जो लोग जीएस नहीं कर रहे हैं वो भी अगर टेलीग्राम में लेक्चर सुन करके देखें, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसमें देयर इज नथिंग दैट यू कैन, एक बार में नहीं आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा. ठीक है ना? एंथ्रो में 2 एरियाज ऐसे हैं वेयर यू हैव टू रियली पुट इन योर एफर्ट्स. एक तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में यू हैव 4 टॉपिक्स. फॉसिल एविडेंस, you have fossil evidence, then primates, then evolution, and then genetics. Then in social cultural you have thinkers. And another topic that is paper 1 also, paper 2 also, it is क्या कहेंगे उसको, आर्कियोलॉजी. पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है. These require real your time also and your mind also, and they are very scoring also. जैसे ये जो है 4 टॉपिक्स ऑफ फिजिकल एंड आर्कियो, एटलीस्ट 170, 180, 190, 200 मार्क्स के क्वेश्चन कम से कम आते हैं, और ऑर्डिनरी लोगों को आते नहीं. पीपल ट्राई टू मग अप. देन थिंकर्स जो है एक ऐसा इशू है दैट इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग एल्स. सोशल के एस्पेक्ट्स हैं, ट्राइबल के एस्पेक्ट्स हैं, इंडियन सोसाइटी के एग्जांपल्स हैं, एवरीवेयर द यूज ऑफ थिंकर्स इज हियर. तो ये जो 2 सेक्शंस हैं, हियर वी हैव क्लासेस थ्राइस ए वीक. फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव 4 days ए वीक. ठीक है? और जब क्लासेस थ्राइस ए वीक होंगी तो संडे को तीनों की रिकॉर्डिंग प्ले होगी. जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो ऑनलाइन ही सिर्फ देख सकते हैं एक ही बार. जो ऑफलाइन वाले हैं यू कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, स्टेइंग इन द इंस्टीट्यूट. डिलीवर नहीं होती कोई भी वीडियोस बिकॉज दैट मीन्स यू आर इनवाइटिंग पायरेसी. ठीक है? बाकी की जो सारा सिलेबस है 4 times a week, और इस दौरान आई टोल्ड यू यू हैव टू राइट 250 आंसर्स और सो. अंतिम सर विल टेल यू हाउ वी प्रोग्रेस एंड हाउ वी इवैल्यूएट. वो सारा सर बताएंगे. And we'll have plenty of monologues in the class. Why don't we have dialogue here? कौन शुरू करेगा? So let's start with the online students. ऑनलाइन बच्चों से शुरू करें. How many of you have decided on optional? Please, a show of hands. Those who have decided that they are going to have anthropology as their option.
Mostly not. What other optionals are you considering? And would you like any Vaids review on that? जो आप सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, चाहें बात करना तो you can. Please unmute yourself and speak up. नहीं? Maybe as we proceed, they will get more comfortable. चलो. Syllabus is there with you. शायद यादव जी ने ऑनलाइन भी डाल दिया होगा, है ना? You can have a look at it. The way that syllabus is there, actually जिसने भी बनाया है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, but it is very awkward. बाकी you compare with every other subjects. Here is a syllabus which is totally disjointed. Even the beginning that is there. First topic, what is anthropology? Relationship of anthropology with other social sciences, and then various branches of anthropology. इससे ज्यादा ridiculous तो कुछ हो ही नहीं सकता. You should have what is anthropology, what are various branches of anthropology, and then you can talk about relationship. अब biological anthropology पता नहीं है and you start relating with biological sciences. Social cultural anthropology आपको पता नहीं है, you start relating with social sciences. So firstly you will talk about what is anthropology, what are various branches of anthropology, and then relationship with other. So whole of the syllabus is just like that. So we have put it in a format the way it is more relevant and the way we proceed with also. कोई पूछ रहा है क्या? ऑनलाइन पूछ रहा हो तो देख लो. एक क्वेश्चन आया था. आई एम अ वेरी एवरेज. एक जूम पे कमेंट आया था. आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, कैन आई क्लियर यूपीएससी? आई थिंक द कमेंट वाज फ्रॉम मयंक. मयंक कहाँ है ही नहीं मयंक तो यहाँ. तो जवाब किसको दें जब बंदा ही नहीं है? हैं? नेम इज नॉट देयर, सॉरी. वन डाउट रिगार्डिंग ऑनलाइन वीडियोस. हाँ जी सर बोलो. See those of you who have proper link, आपका इंटरनेट ठीक से काम कर रहा है, then only you should go for online. Otherwise बहुत वेस्ट होता है टाइम. इफ एवरीबडी, इफ समबडी नेट इज प्रॉब्लम समवेयर, तो 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, कितनी बार रिपीट करो, और फिर जो है जब रिकॉर्डिंग प्ले होगी तब भी फिर जो है दिक्कत आ जाएगी. सो इफ यू आर एट ए प्लेस वेयर नेट इज नॉट वर्किंग, प्लीज शिफ्ट टू ए प्लेस वेयर. तो क्या कह रहा है? लेक्चर, गेट लेक्चर क्या है? आई एम एवरेज स्टूडेंट. वो बंदा ही नजर नहीं आ रहा तो मधुर है डालता है. मैं एवरेज स्टूडेंट. टू प्ले मधुर ऑफलाइन मेहता. और इट विल बी जस्ट ऑनलाइन लाइव देयर लेक्चर. एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. ऑनलाइन वालों के लिए ऑफलाइन की कोई फैसिलिटी नहीं है. Sir, और I'm an इसलिए average student. Clear UPSC. पढ़न I am an average student. Can I clear UPSC, sir? Madhur is talking, sir. see whatever is your background and whatever is your performance previously, it makes no difference. Even people who graduated with 33%, they have made it, and I have seen people scoring 70% failing in the UPSC. It all depends on firstly your writing skills. I told you if you have a bio background or engineering background or commerce background or something like that, you have to improvise on your language. Before you start, at least give 1 month to your writing skills. Second thing is consistency. And third thing is keep motivating yourself till the exam. There are no terms and conditions applied by the UPSC that you will make it or you will not make it.
Can we play the same video? You cannot play the video. Institute will play for you on a specific time. See, one thing I told you very clearly, that if video is given to anybody and if it is made public, who will be responsible? Only our classes are kept so far to our students. बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट के कोई भी लेक्चर्स आप आराम से देख सकते हैं कहीं से भी, टेलीग्राम में या यूट्यूब पे। हमारे लेक्चर्स नहीं मिलते और उसके रीजन यही है कि हम, इवन व्हेन यू हैव अटेंडेड ऑनलाइन, योर कैमरा हैज टू बी ऑन थ्रू आउट द क्लास। और अगर आप 5 मिनट से ज्यादा कैमरा ऑफ रखते हैं तो आपको ऑफ कर दिया जाता है कि भैया आप अगली क्लास में आना, और फिर भी करोगे तो फिर अगली क्लास पे ऑफ हो जाएगा। कैमरा हैज टू बी ऑन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप अभी से ऑन नहीं कर रहे हो कैमरा, इट इज वेस्टेज ऑफ। Sir, Priyanka Sahu has asked on YouTube, can you please compare zoology and anthropology? Zoology and anthropology, you are graduate in or postgraduate? She is from YouTube, तो direct interaction तो नहीं होगा। तो वो कर देगी ना मैसेज। सी, फर्स्टली इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, पेपर 1 ऑफ zoology is very theoretical. Chordates, non-chordates is not very scoring. The second part that is there, genetics and ethology and applications, it is very scoring. But the approach of doctors is somehow much more suitable for UPSC. BSc zoology or MSc zoology, they do not have that approach. And syllabus also is quite lengthy that way. Sir, Yes. sir, I have to appear in 2026 when I start preparation for optional anthro. But optional, so any time you start, the better it is. As far as anthro is concerned, you are preparing 500 marks plus Yes. social issues plus the base of essay. Yes, That yes. way, a major hurdle is covered. GS, if you start right now, current economy, current polity, all that, current national, international, they will continue till the time of your exam. So first thing should be that you finish with your optional, because there are not going to be any changes in the subject matter other than what we give in the WhatsApp, the way Shubham told. You remain member of the group till the time you want, unless you exit yourself. So all the currents with respect to anthro, you get in your WhatsApp group. With respect to general studies, you can visit our Telegram. I wish everybody joins the Telegram group for current affairs in general studies. And I sir, don't- how and Yes. sir, how join course online? Pardon? Yes, sir. बोला नहीं, फिर से बोलो। How can I join course online? वो तो अंतिम सर बताएंगे, मेरा काम है एंथ्रोपोलॉजी, मुझसे पूछो। You know, there are 3 people clear cut in the institute. My job is anthropology. Antim sir's job is a bit of anthropology, but mainly administration. Then Yadavji's job is all technical issues, whether you are getting links or not. ठीक है? और मेरे को व्हाट्सएप नहीं करेंगे कि लिंक नहीं मिल रहा, मैं ब्लॉक कर दूंगा। What should be the right study, balance anthro prelims and mains preparation? I'm giving 25 attempt. See, if you are appearing in 25, then by 31st of January 25, you should be ready with your mains. If not fully, then at least 5 papers, 3 of general studies and both the optional papers. Then only you will have enough time to prepare 1 paper at the best. Though I wish that you complete your GS preparation, you can leave ethics if you want. Ethics is not asked in prelims. But if time is there, prepare whole of your general studies mains till 31st of January, then it will be very safe. If you are just preparing for prelims, only prelims, maybe 1 year, 2 years, 3 years, you cannot score more than 70. Means 35 questions. Another 15 to 20 questions you can attempt only with the help of your mains preparation and current affairs. And that makes you qualify through the prelims.
Like this year, what has happened? They have postponed the prelims because of election. 3 weeks time. So if you are well prepared, on track for the prelims, we have been advising the students that if you are weak in some sections of means, devote 2 weeks to that section and rest continue with your prelims. Because those who have left a major part of their means after prelims, high deduction is there. 3 weeks is good enough a time to make or break your career. So if you are not well prepared for the mains, better to drop it. I've been telling students, always remember that you need only one attempt to qualify. Then why not that attempt be your first attempt? In the beginning, I told these people that out of the top 20, generally 8 to 9 people are those who have their first attempt. If you think the target is 25, but in 31st of January, you realize that significant portion is still not covered, you postpone your first attempt. And if you insist, the kind of problems can be there. I told you that you will enter the cycle of prelims, ultimately you will, I'm deciding on the optional, I have a physics background, trying to understand anthropology as a subject, please help me understand what it is all about. See, if you want to know what anthropology is all about, there is just one book, basic book is there by Amber and Amber. There are 3 writers, Amber and Peregrine, but popular by the name of Amber and Amber. 15th edition is available in the market. It is quite a voluminous book, but it clears all the fundamentals of anthropology. A very good book to decide whether you should take or you should not. Diksha, you have raised your hand. You wish to ask anything? No? Pardon? So the structuring of the answers, will you guide that how to give an extra spice to the? नहीं, मैं पहले डांटता हूं फिर बताता। अब तक क्या किया लाइफ में? आंसर ही तो लिखते आए हो। First is try to write. Like, you know what happens? Let us say you are playing nationals in hockey. You enter the D with the ball, and where to hit, coach is not going to tell you. Coach is going to hit at your ankle. That should be the job of a coach. Actually, most of the things other than tribal India, these are ready-made answers only. The only thing is, if you have to write in 300 words, I tell you 330 or 340. In the test series that you have in general studies, those who provide you with model answers, the word limit crosses double and triple of that. If you have to write in 200 words, they provide you with 500. So what is the use of that model answer? So generally, you get more than what you need for 2 things. Firstly, you don't have to work hard to look for other sources. एक तो आप लोगों की सबसे बड़ी खराब आदत क्या है कि आप लोग गूगल और विकिपीडिया पे दौड़ के जाते हो, अपने क्लास नोट्स को इग्नोर कर देते हो। और दूसरी क्या है आदत? लास्ट ईयर ओनली, दिस ईयर ओनली, लास्ट ईयर अप्रैल यू कैन से, आई रियलाइज्ड कि लोग क्या कर रहे हैं, 4 चीजों को सामने रख रहे हैं और उसके बेस पे आंसर लिख रहे हैं। एक अक्षत है, एक सचिन है, एक अमित नारायण है और एक वो मैडम। एंड व्हेन एवरीबॉडी इज राइटिंग द सेम थिंग, तो स्कोर कैसे मिलेगा फिर? देयर आर 2 ways to score. Either you write more than what others do, or you write different from what others do. More you cannot because space is provided. Speed थोड़ी सी कर सकती है. Different is what class makes a difference. लोग क्या करते हैं? अक्षत की किताब ली, वहां से आंसर टिप लिया, लेके आ गए, सर कैसा है? Any answer, even if it is a model answer,
and majority of the people have written that answer. UPSC considers it an average answer. Answer has to be different, and class makes the difference. How many years current affairs is required? यार पहले आंसर तो पूछ लो. Sir, हाँ. before joining classes, what Amber the and base? amber. Amber and amber. Okay, sir. ठीक है. Okay, sir. And I told you these topics you have to be thoroughly involved. For other topics, if you want, one day you give to anthro, another day you give to general studies. That also you can do. But इस टाइम पे आप नहीं कर सकते, and takes almost 2 months of your preparation. Rest of half the time you can, give to general studies. Half of that half. She's asking 4 months में कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? मैं तो 15 दिन में कर दूं. You have to do it. करना है मतलब करना है, नहीं तो फिर कोई और सब्जेक्ट ले लो. पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मोर देन 1 ईयर चलती हैं, वो ले लो. मैथमेटिक्स की क्लासेस 10 महीने चलती हैं, वो ले लो. Actually, my job is not to give you the content. I told you content is there. जो चीजें that we study in 4 years in our graduation, अगर उस तरह से मैं तुम्हें बताने लगूंगा तो you will take 4 years to prepare. मेरा जॉब आप लोगों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनाने का नहीं है ना, IAS बनने के बाद बनते रहना. ठीक है. और वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एट एनी टाइम 50 to 60 to 70 to 80 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर इन द इंस्टीट्यूट, पढ़ रहे होते हैं. आप सेमिनार के बाद ऊपर जा करके देख लो, उनसे पूछ लो, अपने आप बता देंगे कितना समय हुआ है और कितना कवर हो गया है, कितना बाकी है, अपने आप बता देंगे. बट ऑलवेज रिमेंबर द रूल टू प्रिपेयर अंडर स्ट्रेस सो दैट यू कैन रिलैक्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम. लोग उल्टा करते हैं, बड़े रिलैक्स वे में प्रिपेयर करते हैं और फिर एग्जाम के टाइम पे दुखी होते हैं. ठीक है. जनरली if you are really very sincere, GS mains takes about 6 months and optional takes about 4. You can make it 5 अगर कुछ पेंडिंग रह गया तो. और prelims का preparation takes about 3 to 4. If you are really preparing, if you are sincere, it takes 14 to 16 months to prepare whole of it. ठीक है. तो कैसे होगा? Another question. I had just started my preparation of GS and started with newspaper too. So will it be okay to club GS preparation with the study of cycle of anthro? अरे क्यों परेशान हो रही हो यार? घर बैठो, माँ के हाथ की रोटियां खाओ गरम गरम. किसने कहा है तुम्हें शुरू करने के लिए? Who told you to start with newspaper? देखो, those of you who have not started with your general studies, my advice will be to start with geography. मुझे पता है बहुतों को ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती होगी, बिकॉज एट स्कूल लेवल थ्रू आउट द कंट्री वी डू नॉट हैव वेरी गुड टीचर्स इन ज्योग्राफी. पर जब आप यहाँ तैयारी नहीं करने लगते हैं, एक तो मेच्योरिटी भी आ चुकी है आप लोगों को, है ना, तो ज्योग्राफी जो है, सामने रखो ग्लोब या रखो एटलस और सामने साथ में ब्लैंक मैप. सुनते रहो, ब्लैंक मैप में प्लॉट करते रहो, वाई इट इज इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 करके. एंड बिफोर यू गो टू बेड, मग अप एवरीथिंग. याद रखना एक इकलौता तरीका है. एंड इफ यू आर डूइंग नथिंग अदर देन ज्योग्राफी, इट मे टेक 1.5 months, maybe 2 months. But once you have finished with geography, then internal security, disaster management, climate change, they become very easy. 1.5 months or so. Even economics, fundamentals of economics तो छोड़ दो, rest you have covered in geography. ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन प्लानिंग, रिसोर्सेज, ये तो सारे आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो. एंड इवन ग्रेटर डिटेल्ड ऑल्सो. करंट इकोनॉमी जोड़नी पड़ेगी खाली. हिस्ट्री और पॉलिटी 2 चीजें हैं मेजर जो बच जाते हैं. इवन सम पोर्शंस ऑफ हिस्ट्री आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी, बट पॉलिटी आप सब लोग पता नहीं लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, और इंस्टीट्यूट कोई और बताते भी नहीं. Do one thing before you start polity. There is a series of Rajya Sabha.
द मेकिंग ऑफ संविधान। 10 एपिसोड हैं, 55 मिनट्स ईच के, एंड दीज आर मोर एसेंशियल देन दीज बुक्स। 55 मिनट्स ईच, मेकिंग ऑफ संविधान। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्टली, पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन बिना बैकग्राउंडर के नहीं होता, और उससे अच्छा बैकग्राउंड आपको मिलेगा नहीं। इस सीरीज का डायरेक्टर है श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल को नंबर 2 डायरेक्टर माना जाता है एवर इन इंडिया। नंबर 1 सत्यजीत रे, नंबर 2 श्याम बेनेगल। दूसरी बात, हमारे लीडर्स ने जो कुछ भी कहा है, यू कैन यूज एज कोट्स इन योर एसे। और तीसरी बात, कई रीजंस आपको मिल जाएंगे दैट में इंप्रूव योर एथिक्स। मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बताते इस सीरीज के बारे में। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं कि हमारे अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? श्याम बेनेगल की सीरीज यार, वो ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डिटेल्स, बिना रेफरेंस। इवन जो अपीयरेंस है, पटेल जो है वो पटेल लगता है, नेहरू जो है वो नेहरू लगता है, जिन्ना जो है जिन्ना लगता है। इतने पर्टिकुलर ही वाज, थॉरोली रिसर्च्ड है, एंड बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। जैसे मान लो आपने पॉलिटी पढ़ लिया, किस किस ने पॉलिटी पढ़ लिया? अच्छा ये बताओ, वाज वुमेन रिजर्वेशन डिस्कस्ड ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स? हाँ, yes sir. Then why it was not implemented? No sir. Yes. Was OBC reservation discussed? Little bit sir. Little bit means Based on articles. why Based on articles. why it was not included? This series will tell you. This will shifted to mostly social issues. No, this series will tell you. Okay. Issue was discussed. Rajkumari Amrit Kaur, she stood up. Women are not a weaker section. We don't need reservation, and the matter was settled. And OBC reservation discussed. All leaders of Bihar stood up that whoever whole of Bihar is backward. So they decided to keep it in directive principles. So without backgrounders, polity you cannot handle. Then in history, ancient and medieval, these mainly relate to art, architecture, literature. Maybe some travels by the foreigners, and economic and administrative terminology. Political history is least required, even North also, but South India is becoming important. Cholas and Cheras and Pandyas and Vijayanagar Empire and all those things. Yes, it all depends on you. Firstly, what is your optional? तो जब डिसाइड ही नहीं किया, सोशियोलॉजी, सी सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, दीज आर टू ऑप्शनल दैट रिक्वायर ए वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल। और मैथ्स वालों के पास राइटिंग स्किल्स तो नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। सर वो आदत नहीं है आंसर लिखने की लंबे, तो फिर तो वो आईआईटी मेडिकल एंट्रेंस की क्लास लेनी शुरू कर दो ना, लैक्स ऑफ रुपीज मंथली अर्निंग हो जाएगी। आदत नहीं है क्या मतलब? जब ओखली में सिर दे दिए फिर आदत का क्या मतलब? रिक्वायरमेंट पूरी करोगे ना। जब राइटिंग स्किल जो है वो फर्स्ट रिक्विजिट है, यू शुड फर्स्टली डू फॉर दैट। कोचिंग इज नीडेड जस्ट फॉर आंसर राइटिंग स्किल्स या फिर कंटेंट? आंसर राइटिंग ही सब कुछ होती है यार, लेक्चर तो कोई भी दे लेगा। मैंने अभी बताया ना था, कंटेंट तो हर जगह मिलता है। क्वेश्चन इज हाउ टू इंप्रूव योर चांसेस ऑफ सक्सेस, उसके बिना नहीं होता। ठीक है? और मेरे को ये सारी चीजें क्यों आती हैं? बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड द इंस्टीट्यूट इन 1985, माय टीचर्स यूज्ड टू बी एग्जामिनर्स। तो मैं उनसे एक एक बात के लिए लड़ता था कि इसके नंबर क्यों होंगे, इसके क्यों नहीं होंगे। जैसे छोटी सी बात है, इवोल्यूशन में म्यूटेशन की बात होती है, सडन चेंज होता है। तो मुझे सडन क्या करते हो म्यूटेशन के लिए? मैं सर आधा इकट्ठा ब्लैक। पागल हो तुम? ये क्यों सर? इट्स द ओनली सोर्स ऑफ न्यू वेरिएशन। तो ठीक है, तुम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात कर रहे हो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की? पॉपुलेशन जेनेटिक्स कितनी जनरेशन लगेंगी? सेवरल जनरेशन। फिर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया?
So I discussed each and everything with them and I learned what UPSC is all about. ऐसा मौका मिलता नहीं है किसी को. How many questions? I told you you have to practice about 250 answers. अगर तो फिर then we'll have test series, more answers will be there. Then after prelims we'll have time bound answer writing program. Again some more answers will be there. ठीक है? I'm reading the Sapiens book and I find it interesting. Is anthropology as a subject is in line with this book or भाई वो that is more like a novel and that is a western attitude towards humans. हमारा एटीट्यूड और वेस्ट का एक सिंपल सी चीज लेते हैं. अब जैसे हमारी और अमेरिकन की बात करो, अमेरिकन इकोनॉमी इज बेसिकली कंज्यूमर इकोनॉमी. आपकी उम्र के जितने भी अमेरिकन हैं दे हैव 40 to 45 क्रेडिट कार्ड्स ईच एंड दे हैव स्पेंट देयर इनकम 2 years hence. आवर्स इज ए सेविंग इकोनॉमी. हमारा एटीट्यूड है. एक चपरासी 15,000 भी कमाता है तो सोचता है यार किस तरह से 500,000 रुपए सेव कर लो. So Western model of whether it is philosophy or anything else is different from, of course it is related somewhat only, not much. लेकिन सैपियंस की वजह से बहुत सारे लोगों ने एंथ्रो ली है. हाँ किताब. अरे भैया ले लो. नहीं कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग या बोरिंग नहीं होता. लेट मी टेल यू वन थिंग. पढ़ाने वाले ऐसा भी मैथ्स पढ़ाते हैं कि आपको नहीं भी आता तो आपको मजा आने लगता है. और पढ़ाने वाले आपको हिस्ट्री ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको आता है तो आपको बोरिंग लगने लगता है. So whether a subject is interesting or boring, it all depends on the person who is sitting on this side of the table. ठीक है? So books to study for anthropology. Pardon? On the books to study, Books? sir. For anthropology, sir. So See, the my class book, notes are enough. my book is a compulsory book. So those Social notes are cultural enough. anthropology, because actually it was a part of the study material. I improvised it and converted into a book for wider reach. So you do not have study material for that portion. Rest of that you will get. For other things, only selected chapters are there. Always remember, reading too much does not make you a bigger IAS. Instead of reading 5 things, better one thing you read 5 times. And every time whenever something new is required, it will be told. We have WhatsApp group for every batch and everything is told that next class you have to read this and whatever additional matter is there, that is also added in the group itself. Okay? Otherwise there is no limit to reading. You visit my house, I think 5,000 books should be there. Kitni hai? Well, more than that. Sir, gentleman who asked the question about Sapien has a second part. Can you show? What is that question? Anthro optional is lengthy, something like that. Ah, yeah, really very lengthy. I finished in 4 years. So, if you look at the syllabus, the way it is released by UPSC, anthropology and botany are given side by side. And you measure with a scale, botany seems half of anthropology. But if you ask any botany person, botany is at least 3 times that of anthropology. So it depends on. If you want me to finish in 4 years, we can. But you have to do it. Syllabus actually is neither short nor big. It depends on how you approach it. Say, for example, that fossil evidence. In our academics, we have more than 90 questions we have to prepare. But here they hardly ask 5 or 6 only. In archaeology, similarly, we have more than 80 questions.
But here also again we have 10 or so. So that way it becomes smaller. The question is whether you are studying a subject as an academic or for UPSC. It makes a lot of difference. See, if you compare with geography, the first topic, geomorphology. Geomorphology is slightly bigger than Anthro paper 2. So how big is anthropology? I told you in political science they take more than a year to finish and having classes daily as well. Next comment. Nagarani, I'm from Andhra Pradesh. I don't know Hindi. Classes will only be in English. Classes are in English only, but jokes are in Hindi. My problem is I cannot translate shlokas or poetry or other things. Dictation will be thoroughly in English. No, Priya, we don't believe in working professional. We think that UPSC is a whole-time job. You cannot take up 2 jobs at a time. Either you be a professional or you prepare. For revision, you can continue with your job, but not for original preparation. The way I told you, you have to prepare twice at least, read at home, send me the doubts, attend class, go back, read again, also your class notes, write at least one answer and read for next days. Do you think you can do it along with your job? For note making, what would be the optimum strategy as to ease organization and editing at what is this? गगनदीप जी समझ नहीं आया कुछ यार. सर मतलब जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट चलते रहते हैं तो कंटेंट काफी होता रहता है हमारे पास. वो कोई काफी नहीं होता. Start from day one you have to write answers. If you want to make notes and then write answers, what for the books are there? Everything is written there. On day one, you will be you will be getting a list of the questions that you have to prepare in the first month or so. And as we keep covering the subject, you have to keep writing. And how it is to be done, I told you, Antim sir will tell you. इसी तरह से नोट्स बनाने लोगे तो 1 साल तो एंथ्रो में लग ही जाएगा. फिर पास होने के बाद उसको पब्लिश भी कर देना. फिर अक्षर ने भी तो ऐसा ही किया. अक्षर ने लेकिन पूछा था मेरे से और मैंने कहा था कर दो. हालांकि जब रिजल्ट आया था ही वॉज फिनिश्ड ओनली विद पेपर 1 और मैंने उसे कहा भी था कि पेपर 1 निकाल दो, पेपर 2 बाद में निकाल देना. ये सेट सर पर बाद में टाइम मिले ना मिले, वो पेपर 2 हर्षप में किया था. और वैसे भी पेपर 2 में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं और 5 साल जो हैं पेपर 2 के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है. Sir, there is a common question from YouTube, the multiple comments. Can you suggest the strategy for GS? सर बता तो दिया मैंने ज्योग्राफी से लेकर के सारा. It was for a self preparation without coaching. मैं सेल्फ प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ. जो भी पढ़ना है या सी इन GS एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड पॉइंट वाइज. आपको पॉइंट्स में नोट करना है, पॉइंट्स में याद करना है, पॉइंट्स में लिखना है. स्कोरिंग ही पॉइंट वाइज होती है. And again, this gentleman. होता है क्या मैं आपको बताऊं. वो क्या एवर नोट होता है, क्या होता है वो? Evernote is there and OneNote is there. OneNote जो भी है. आप जो है 2 फाइलें बना लो, नेशनल इंटरनेशनल. ठीक है. फिर नेशनल में डिवाइड कर लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, बायो, जो मर्जी. फिर उसके बाद ज्योग्राफी में ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन प्लानिंग, रिसोर्सेज, जो कुछ डेली आप ऐड करते जाओ, कीप इंसर्टिंग इन दोस. लेट अस से मान लो ज्योग्राफी के लिए आपके पास 50 पॉइंट इकट्ठे हो गए. लेट अस से लुक एट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. 6 से 8 क्वेश्चन बनेंगे ज्यादा से ज्यादा. 2 या 3 पॉइंट तो कॉमन ही होंगे इंट्रोडक्टरी. देन फॉर एवरी आंसर यू विल बी नीडिंग 10 to 15 positives and 5 to 10 negatives. That will be based on your wisdom कि कौन से पॉइंट आप किस आंसर में यूज करते हो.
अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको बताने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। Sir, another question is there. If I'm preparing anthropology myself, can you please suggest some do's and don'ts? UK Roy. बंगाली है? Not sure. हाँ मौसा है, वो इससे बारी क्या नहीं? He's from YouTube, sir. तो यूट्यूब में बंगाली का अरे लैंग्वेज मतलब बदल जाती है। he cannot respond vocally. I think I have 3 videos on the analysis of syllabus. You can watch them. Reading list is also there. The only thing is that if you do not have a background, there are 5 sections in Anthro and 5 different approaches will be required. Social, marriage, family, kinship, etc. One approach. Thinkers, another approach. Physical, another approach. Indian, another approach. And tribals, another approach. So if you have someone with you to guide, definitely you can do on your own. The only thing is that it will be more time consuming. Issue will be how will you evaluate yourself? मेरे पास दृष्टि के और नेक्स्ट के जो हैं बच्चे आते रहते हैं, सर वी वांट टू ज्वाइन आंसर राइटिंग ग्रुप। यार आंसर राइटिंग इज ए पार्ट ऑफ द होल सिस्टम यार, वो तो है नहीं, हम तो कोचिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो वहीं इवेल्युएट करा लो फिर। और कुछ इस तरह से अगर मैं हर एक को इवेल्युएट करने लगूं तो क्लासेस तो मेरे को बंद करनी पड़ जाएंगी फिर। बिसाइड माई लॉयल्टी इज टुवर्ड्स माई स्टूडेंट्स। और पूछो। यार हमारे जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, एवरी डे वी पुट इन न्यूज करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू मीन्स। लोग आमतौर पे 2 अखबार पढ़ते हैं, एक्सप्रेस और हिंदू, और फिर वो मंथली योजना और कुरुक्षेत्र वगैरह जो भी हैं। आई स्टार्ट विद 2 हिंदी न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स। देन आई शिफ्ट टू हिंदू, एक्सप्रेस, मॉर्निंग स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, एक आध छूट गया होगा शायद। And all whatever relevant news are there, I put in the telegram generally by 9 o'clock before I start my class. कभी कभी लेट भी हो जाता है। That is enough for means. उसी की फाइल बनाने की बात कर रहा हूँ नोट के ऊपर। और फिर उसके बाद ये प्रीलिम्स के लिए यू टेक अप एनी मंथली, बाबा है या विजन है या जो कुछ भी है, वो इनसाइट्स है, कोई भी एक रेगुलरली। 365 मत लेना क्योंकि कई चीजें काट देते हैं उसमें से। और सिंसियरली अगर आप 25 में अपीयर हो रहे हो तो योर सिंसियर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स विल स्टार्ट, करंट अफेयर्स विल स्टार्ट फ्रॉम जून। मैगजीन जो है जो मई को कवर कर रही हैं टिल नेक्स्ट मई, जो अप्रैल को कवर करेंगी। और मेंस जो है वो अभी से आप बैकग्राउंड बनाना शुरू कर दो। इंटरेस्ट जनरेट करने में भी टाइम लगता है। How to self-evaluate answers and do better answer writing? सेल्फ इवेल्यूशन कैसे कर लोगे? यू विल नीड अनदर कोचिंग रिगार्डिंग हाउ टू इवेल्युएट योरसेल्फ। जो कोचिंग हुई थी उसमें so they suggested to self-evaluate answer at first on our own. तुम तो ऐसे कोचिंग की नहीं तुमने? Next day I will start. ये वैसे you have to be trained about, like our objective when you are writing an answer, it is not just about writing an answer. It is right about when you appear in the exam and you come back, you can clearly say sir 290 आ रहे हैं सर, इससे ज्यादा नहीं आ रहे, प्लस माइनस 5% कर लो तुम। वो प्रैक्टिस करने के बाद इतना पता लग जाता है कि कैसे होता है। बट यू कैन नॉट स्टार्ट विद दैट। अगर स्टार्टिंग की बात है, तुम्हें स्विमिंग आती है? स्विमिंग आती है? किसी को आती है? मेरे को सिखा सकते हो? उसके लिए तो तालाब चाहिए ना, पानी चाहिए ना। सेम थिंग इज विद आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन।
अब मुझे पूछे कोई कि आंसर कैसे लिखते हैं, भैया इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्कस करते हैं और कंक्लूड करते हैं। वो तो ओनली व्हेन यू राइट आंसर देन ओनली यू कैन रियलाइज वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड व्हाट शुड बी द राइट वे। ठीक है। Should I start answer writing from now on only? Because since I have started coaching, so should I start answer writing from now on, or should I wait for some time to आंसर राइटिंग फॉर व्हाट? mains GS? इवेल्युएट कौन करेगा? अभी तो मेंटर बोल देते कि मैं खोला तो यार मेंटर्स उनका पहले उनसे पूछ लेना सर कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, आपने कितनी बार मेंस दिया है और क्या स्कोर रहा है, हैं? मतलब मेरे कई स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी प्रीलिम्स भी नहीं दिया वो मेंस की आंसर राइटिंग इवेल्युएट कर रहे हैं कई इंस्टीट्यूट में। इवेल्युएशन कैन बी डन ओनली बाय द कोच। जहाँ तुम कोचिंग कर रहे हो वहीं से कोच होगा ना, अदरवाइज जीएस में इवेल्युएशन कैसे होती है मैं बताऊं। मेंस में अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है तो 4 जगह टिक मारेंगे, 4 कमेंट्स देंगे और 4/10 स्कोर दे देंगे। कोचिंग इज नॉट हाउ मच यू स्कोर, कोचिंग इज हाउ टू इम्प्रूव। 4 का 6 कैसे बनाना है, दैट इज कोचिंग। एंड दैट दे वोंट, मे बी दे डोंट नो ऑल्सो। अपना इंस्टीट्यूट खोल लो, सारे जितने भी पढ़ाने वाले हैं फ्री में पढ़ा देंगे तुम्हें, और क्या। एनीथिंग एल्स? Sir, there is again a question from YouTube. Perhaps you have answered it. Prerequisites for joining anthropology. Prerequisite for joining anthropology. Prerequisite for appearing in UPSC. Mental preparation first thing. Be ready with the environment which you do not know, the kind of pressure you will face. You don't break and you don't make it a habit to appear again and again and again. ठीक है? I told you only one attempt is required and your preparation at the best requires 1.5 years, even if you have no background, even if you don't have writing skills. मेंटल टफनेस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए। यूपीएससी तो अपने आप होता है, पीछे पीछे हो जाएगा यूपीएससी। And if you are not yet decided about the optional for Anthro, I advise that you read that Amber and Amber. That's enough. Done. बाकी एडमिशन का प्रोसेस अंतिम सर आपको बता देंगे, बट वन थिंग इज हियर, लेट मी टेल यू कि you can repeat classes, you can repeat test series, everything you can repeat, and once you qualify through and you are in the final selection in general cutoff category of IAS, IPS, IFS, you get your fee back also, full fee. किसी भी इंस्टीट्यूट में इतने गट्स नहीं होते कि वो ऐसे करे, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट तो बनाए होते हैं घर से, कितने लोगों को वापस करेंगे। मैंने इस बार एक वीडियो बनाई थी कि अगर इतना ही है तो मेंस के टाइम पे आप बताएं कितने रिजल्ट आए हैं उनके और कितने कैंडिडेट से। हमारा ओपन है, हमने कह रखा है 30 स्टूडेंट्स हमारे पास हुए थे, फाइनल सिलेक्शन में 12 या 13 या 14 या 15 लोग पास होंगे। सिंपल, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी बता दें, और फाइनल सिलेक्शन में हमसे 10 गुना तो ज्यादा हर एक के होंगे। ठीक है, तो ये फीस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। गट्स चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट की जेब से पैसा निकलवाने के लिए, करो, हम तो इनवाइट कर रहे हैं। और फिर साथ में एक मोमेंटो मिलता है सिल्वर का, आधे किलो का। काफी बड़ा इंसेंटिव है। वैसे चाहो तो मैं लाल किला भी आप लोगों के नाम लिख सकता हूँ, ताजमहल भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन जो विजिबल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी बता रहा हूँ कि सामने में है, ले लो। ठीक है।
बाकी जो है वो अंतिम सर जो है आपको बताएंगे। जो भी डाउट्स वगैरह हों आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज बताओ, ऑफलाइन वालों को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ऑनलाइन वाले एट ए लॉस रहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाले तो साल भर बैठ के यहाँ पढ़ते भी रहे हैं अगर इंस्टीट्यूट में बैठ के, एंड कहीं भी लाइब्रेरी ज्वाइन करो तो 2000 रुपीज तो लगते ही हैं, तो 24,000 का तो वहीं बेनिफिट उठा लेते हैं, तो फिर फीस कहाँ दे रहे हैं वो वैसे भी, ऑनलाइन वाले दे सफर। तो इस बार से हमने सोचा है कि उसका थोड़ा सा जो है इम्प्रोवाइज करेंगे। वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑफलाइन फीस रिजल्ट आने के बाद। अभी जो है 23rd को जो है आप टोकन लेकर के बाय 29th यू कैन टेक योर एडमिशन। और फिर रिजल्ट आने के बाद मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टू रिवाइज, 3 साल से रिवाइज भी नहीं किया हमने। ऑनलाइन कम कर रहे हैं, ऑफलाइन बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन के लिए जो है 40,000 प्लस जीएसटी। सर एक लेट क्वेश्चन है थोड़ा यूट्यूब से। डिफरेंस ही विशारद इज कंफ्यूज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अरे सोशियोलॉजी लो ना, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है यार, खुद से भी प्रिपेयर हो जाता है, मेरी भी जान छूटेगी। देखो, पहली बात यह है कि राइटिंग स्किल्स, I just told that sociology and philosophy, these are pure social sciences that require very good writing skills. दूसरी बात, सोशियो और एंथ्रो का सिलेबस इफ यू कीप साइड बाय साइड, सोशियो सिलेबस सीम्स लेस, एक्चुअली इट इज मोर देन डबल। हमारे यहाँ एक चैप्टर होता है, उनके यहाँ एक चैप्टर होता है, हमारा पूरा ट्राइबल इंडिया एक चैप्टर है वहाँ, हमारा आधा पेपर है। नंबर 3, पेपर 1 in sociology, it is based on 5 thinkers: Marx, Merton, Weber, Parsons, Durkheim। और साइंस वालों को सोशल साइंसेज के थिंकर आसानी से समझ नहीं आते। इन एंथ्रो आल्सो वी हैव थिंकर्स बट दे आर सेपरेट। देयर पेपर 1 इज टोटली बेस्ड ऑन दीज 5 थिंकर्स, और पेपर 2 तो लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो है कि एंथ्रो में मैं हूं भाई। शाहरुख खान ने कहा था ना मैं हूं ना, मैंने ही बताया था उसको। ठीक है, पर सोशियो को पढ़ के समझना आसान है अगर थिंकर्स आते हैं तो। सो हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल बिफोर स्टार्टिंग यूपीएससी? यार ये क्या बात है, दो ही तो चीजें होती हैं, ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है। 10th की ग्रामर की किताब को पढ़ जाओ 4 बार 8 बार 10 बार, और ग्रामर तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो एवरी टाइम 2 नए वर्ड्स निकालो और उनको यूज करो। मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि जिन लोगों को न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए भी कोचिंग चाहिए और जिन लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी कोचिंग चाहिए, उन लोगों को यूपीएससी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, 6 लाख लोग बैठ जाते हैं। मेरी एक वीडियो है हाउ टू क्रैक आईएएस, उसको आप देखिएगा और फिर वो देख करके समझिएगा कितने लोग सीरियस होते हैं और कितना कितना आसान है यूपीएससी पास करना। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई साथ में, उसको देख के। ठीक है, हमारा चैनल तो सबको पता है, नहीं पता? वैद्स आईसीएस दिल्ली करके चैनल है जिसमें मोर देन 100 वीडियोस यू विल हैव आप योर बेनिफिट, अगर आप क्लास नहीं भी कर रहे हैं तो। और एक चैनल और भी है जिसको कोई नहीं देखता, पर काफी काम का है। ये क्या हो रहा है? ये बक्की बैठ गई यार, ये फिर बैठ गई, बताओ। नई बात, नई शुरुआत। बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो आपका जो ट्रेंड बदल रहा है जनरल स्टडीज में, लाइक आई हैव मोर देन 20 वीडियोस ऑन द हिस्ट्री दैट नेवर वाज। झूठ मूठ की हिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है, देन हिस्ट्री दैट वाज, ऑल दोज इश्यूज व्हिच कैन बी ऑफ यूज वन वे और द अदर इन योर एसे और जीएस और इवन इन इंटरव्यू। छोटी छोटी वीडियोस है बट
बताया मैंने कभी उसमें कहा नहीं कि आपको देखना देखो, नहीं देखना मत देखो. आई नेवर रिकमेंड. डन. एनीथिंग एल्स? यस सर. What should be the depth of physical anthropology? Like their concept and their terminology basically overlaps with class 12. So what should be the depth? What should be the depth of physical anthropology? Depth is only as much as we cover, not beyond that. Particularly with genetics. Again, I'm telling you that Vaids ICS daily channel is there. There is a video on terminology of evolution and genetics. You understand that video and you will understand. See, for any technical issue, terminology is the most crucial thing. Let us say somebody said he is from physics. If I ask him, can he teach me about inertia? Anybody can? You'll have to start with units, scalar and vector. You will have to tell me about speed, velocity. You'll have to tell me about laws of motion. And then you will come to inertia. Same is the thing for any technical thing that is there is a way. We make the things difficult. Things are not. Done? God bless you. Antim sir, of course, will tell you the further details. If you feel you want to interact with me, mostly I'm free from 11:30 to 1:30. Okay? Yeah. God bless you. Okay. Hello everyone. My name is Anthim. I am Associate Director at Vaids ICS. I take the position of anthropological thought, what you call theories, thinkers, and a few of the basic concepts. Okay. Let me first brief you about the upcoming batch, and then we can interact further. So the batch is starting from April 23rd. And like sir said, we'll be having admissions before hand. This is first time we are doing it because we are planning to revise the fee. Okay, so the fee will be revised in after the result of 2023, and till then the fees for online is 40,000 plus GST, and for offline it is 50,000 plus GST. And those who are interested, I advise you can take the advantage and register yourself on our website on 23rd. We'll be opening the admissions on 8 a.m. And you can opt for your registration. You go there, fill in your basic details, and you will be getting a unique token number. For online people, you will have next 6 days to make the fee payment. That is till 29th, end of day. And for offline people, you will be given a date and time slot where you can come at the institute and complete the formalities. If you are located outside of Delhi and planning to come and have any issues with date, you can reach out to me or the admin. The admin number will be provided in the when you get the token. Okay? Let me just share my number first. Okay. So about the way of coaching, I'll just give you a highlight how we proceed at Vaids ICS. You are always knowing the topic in advance that is to be covered in the class. Okay, you have to read it and come. The subject is new to everybody. I hardly meet one person every year who has any background in anthropology. Otherwise, it's new to everyone. So it's very good to read and come to the class. Right, rather mandatory, I will say. Okay, and once you any section starts, say social institutions start, fossil evidence starts, any section starts, I or Ved sir will give you the list of questions that are to be prepared by you guys. As the topic gets covered in the class, you will write the answer. Okay.
The answer writing process we encourage you to do in groups. I form groups, and what the advantage of group is that you get a peer review. You your motivation level stay up. Okay, and if you are able to build a good enough chemistry, you can take the group to GS as well. Okay. One brilliant example of such group was Akshat Jain, rank 2, Shreyansh Kumar, rank 4, and Anshul Jain, rank 282. And there was another guy who couldn't make it that year, he made next year. All of them are for 2018. So I hope you understand the advantage of having a group, peer group. So once you have written an answer, you will show it to your group, peer group, and get their reviews. If you feel the reviews are relevant, you will implement them and share with the assigned mentor. Your each group will be assigned with an individual mentor, and then the mentor will give you a feedback. Okay. According to the feedback, you will improvise, and the answer will reach a decent amount of maturity. Still, the answer is not yet finalized. Then we will show the answer. You will show the answer to Vaids sir. Okay. If online, we'll do it on video call. If offline, you can in person show it, and then the final feedback comes from sir. Okay. The reason we do that is with these many iterations, your answers are very well polished, and you're able to retain them well. Okay. Then second is Vaids sir is famous for scolding the students if they present wrong answer. I hope you have heard. So to shield you from that, I'll say that we have said this process. You're welcome to show your answers directly to sir also, but वो डांट हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता. ठीक है. It's your call. Okay. After the class is over, the topic that you get covered in the class, write answers for that, and accordingly go through the evaluation process and prepare for the next class. This is minimum expected from you if you wish to take advantage of the course. If you are not doing answer writing, then I have to say you are wasting your time and energy and money. All. Okay. It's the answer writing will be starting from day 1. So those of you who are in a habit of thinking कि यार पहले 5 दिन 10 दिन तो orientation चलता है, that's not the case. ठीक है. So better be prepared, and those traveling from out of Delhi, I suggest you come at least a week before. ठीक है ना, दिल्ली थोड़ा harsh भी है weather वगैरह, लोगों को कहना है कि लोग भी बहुत लड़ाके हैं. ठीक है. So maybe it will take you 1 week to adjust. So I suggest if the batch is starting on 23rd, you reach here by 15th. Okay. Then this is what you will be doing during the course. After a few chapters, 3 or 4 chapters, we'll have a class test to see the how the progress of yours is going on. Okay. And this is the schedule only for the 4 months batch. Along with the classroom course that you join, you will get access to test series, okay, time-bound answer writing, interview guidance, everything. So the test series, if you're targeting 25, will be held in October this year, 24. And it will have 10 tests, 6 sectional tests, and 4 comprehensive tests. Okay? And all that is a part of included in the classroom course fee itself. There is no additional charge. Even if you feel that you are weak in any topic and wish to attend the classes for that again in any upcoming batch, you are more than welcome to do that. Again, no charge. Okay? Even I have seen people who, due to some personal emergency, lost contact with UPSC preparation and joined in 2019. They are repeating our classes in December 23 batch. Okay? So the support goes on as long as you wish to stay connected. साथ नहीं रहे तो फिर क्या कर सकते हैं. ठीक है. Then this is about test series before prelims. Once you are done with your prelims, that very evening you will be knowing that whether you are qualifying or not. Okay? Then we suggest you to immediately come to Delhi if you're qualifying. Then we have 2 comprehensive tests at gaps of 2 weeks each, paper 1 and paper 2, to brush things up. And after that, the mains result is out, prelims result is out, and those appearing in mains, we have dedicated time-bound answer writing sessions, around 10 sessions we have.
and those are targeted that how should you address questions in a time-bound manner when you're sitting in an exam hall. Okay, so ideally for a 20 marker you should get 14 or 15 minutes. So we encourage you to write in 13 minutes so that those 10% questions that you guys say are unpredictable, you have enough of time to understand and write them down properly. Okay? So this is the idea how the coaching proceeds. Okay? About the batch, the timing is 2 to 4:30. Okay, and schedule is 3 to 4 days a week. You are made aware of that in advance. When physical is going on, we prefer to have lesser classes because there is a taboo is not a mental block, I'll say, among students towards biology. यार कैसे होता है? हाँ? अभी भी आप लोग सब सोच रहे होंगे कि how are diagrams made? बहुत मुश्किल है. Have any of you those concerns? Diagram कैसे बनाते हैं? नहीं? And when you understand things, you can do that easily. I come from an engineering background and later shifted to anthropology. My graduation is electrical engineering, but with enough practice, you can do that. For instance, if I have to draw a human skull, I'll start with the forehead that is supposed to be little projecting. Then you will have the this occipital, your nose depression, your teeth, your chin. This will be your cheekbone, frontal, temporal, occipital. I got it properly? How much take? 30 seconds? Same you can do easily. All it needs is the practice and the way, the right approach. Okay? Abhi to thoda sa ganda hai. It should be a little better also. Anyway, so this is about the course. And though the people who attend online, I'll tell you the process. We have our app for iOS and Android, mobile and tablet devices. You can attend the class on that. The classes will be live and interactive, the same way we are having the seminar. Okay, you can raise your hand and ask any question, any doubt you have. Then the classes are live in, but India है थोड़ा network का issue कई बार हो जाता है. So in that case, we have replay of the 3 or 4 classes of the week on Sunday. Just like you have, watch on demand on Tata Sky or anything, same way it is played on your app and you can watch it. And sometimes the lead is there that, say, for example, evolution genetics, say pedigree analysis. It's quite a little challenging topic, I'll say. So people do request कि sir इसका replay दोबारा कर दो. We do that. That is done on your need basis. Basically, the idea is that you guys run the institute. छुट्टी कब रखनी है, क्लास कब रखनी है, सब तुम्हारी मर्जी से, मर्जी नहीं सहमति से चलता है. Murthy is like a dictatorship. Okay. So this is the way we proceed with the classes, how we deal with the batch. The course duration I forgot to mention, it was 4 months. It's 4 months. Laptop, क्या है comment भाई साहब? नहीं एक और है. The portion remaining then theories, sir will be taken. जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का पोर्शन है, जो आपके सिलेबस में पॉइंट नंबर 6 है, बॉटम लेफ्ट में जो है, देयर ओनली पहले पेज पे. दिस पार्ट आई टेक. हाँ, the rest will be taken by sir. And can we watch online? Like, no, sir, we can't do it through laptop. We have tried immense things to check whether you can record or not. So one way or other, you can record using the laptop. So we knowingly have to restrict laptop, MacBook, जो भी तुम्हारी कंप्यूटर की डेफिनेशन है, we have to. ठीक है. Some people were asking about GS answer writing, na? उसके लिए I can try and give you a solution. Last year's topper, Shruti Sharma,
21, हाँ, Shruti Sharma. So she scored very nice in GS, some 500 plus. Of late, no one has. So if you are able to get her answer copies, get that, and take the same question, prepare your answer, and then try to compare. I went through her answer sheets. It was very tough finding the credible ones, but I could. I'm connected. So when I could see the answers, they were very holistically covered. Okay? She could understand that in 200 to 50 words, we cannot elaborate everything. So what we are have to do is give a hint to the examiner कि हमें ये आता है, and that gives you marks. So that is what she has done, and I'll advise you to follow. Okay. So anything you would like to ask? Online people, anything further you would like? That be all. So I have made last year join on a better होगा कि उससे पहले. Madhur, be a little loud. ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर ज्वाइन होना बेहतर रहेगा कि थर्ड ईयर में? It depends. Is it your engineering? Graduation is engineering? Yes, sir, I'm in engineering, BTech. So in that case, you will have more leverage to prepare in the final year, because either it's internship or very less subjects to take up. So you will have some advantage there. क्योंकि थर्ड ईयर में करोगे फिर your preparation, your graduation percentage may get messed up. So you have to justify that in the interview then. It will be करंट better. अफेयर्स कितने साल की करनी चाहिए सर? Please repeat yourself. करंट अफेयर्स कितने साल की प्रिपरेशन होनी चाहिए? Yeah, current affairs you should do if you are appearing in 25. The best will be that you do it from budget of 24. Okay, sir. Thank you. So February 24 से और बताओ, anything else you guys? The next batch then will be in June, and after that we'll have a batch in August. The advantage of joining this batch is that the crowd is lesser. Okay? As soon as the graduation exams of people land in June and August, the bulk is coming. So वो उस हिसाब से that will be the advantage. Otherwise, if you are having any GS coaching, you have to think with that. Online, offline, it's 50,000 plus GST. That's 59,000. 59. सर ऑनलाइन के लिए फीस कितना है? 40,000 plus GST. That comes out to 47,200. Okay, sir. I didn't have much interaction with you guys, neither, sir. Are you having any queries? Would you like to say anything? नहीं? अच्छा हो गई? Okay, great. अगर ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे एंड इन एनी इमरजेंसी वी मिस्ड एनी क्लासेस तो यू विल प्रोवाइड? देखो, if you are in Delhi nearby, the recordings are available in tablets. No, sir, I am talking about online. Online, if that case is there, you can place a request for replay, and we can do it. Maybe we can do it at an odd timing, maybe late evening, 8 o'clock or something. But we do that. Okay. But class miss करना emergency पे हो तभी, otherwise don't make a habit out of it, है ना? चलो. Sir, I had a question. बोलो. So, sir, when will the admission start for online batch, and what would be the last date? That's what is told to you, that we are starting admission on 23rd, and the registrations you have to do on 23rd, yeah, March. Okay? You have to do the registrations then, and you will have the remaining time to pay the fee next 6 days. Again, the admissions will reopen in April, but the fees may get revised. Many will get revised. Okay. Okay. Sir, after I completed Amber, then I joined coaching, or now can I join coaching? देखो, it will be better if you have read Amber and Amber. होता क्या है ना, that you have a fear of unknown. Every human has it.
So if you are not comfortable not knowing anything, you will have some or other form of fear, mental block. यार ये क्या है यार? Suddenly I throw heavy terms on you, monogamy, polygamy, then polygynandry, polyandry. You will just be like, क्या क्या बोल रहा है यार ये? So if you go through the Amber and Amber once, just like a novel, casual, because you have more than a month now before the batch starts. So if you can do that, that will be good for you. It's not mandatory, but it is advised. Sir. Sir, how to handle our optional with the GS? Are you doing coaching or? Yes. And where is it? Vision. Vision IS. Vision. Yes. When did you join the coaching? September. September. Yes, sir. And when do you expect it to be over? 25. कब तक खत्म होना? So, Same September. देखो दो ऑप्शन है. First is that first you make sure that they are not going to do 2 classes in a day. सबसे पहले ये अपना मेंटर से जाके पूछ लो जो भी आसाइन. Because if they are doing that, तब तो फिर कैसे करोगे एंथ्रो क्लास? या उधर छोड़ना पड़ेगा. And second thing is when these topics are mentioned are going on, I suggest you stop your GS classes because you are getting your video recordings. ठीक है ना? And you can catch up later also. If you are wanting to join both GS and optional at the same time, then make sure that when physical portion is going on, you stop your GS classes and refer to the recordings. Okay? And second way will be to totally rely on recordings later and focus on 4 months for Anthro. Because the answer writing practice that goes on rigorously, that demands 5 hours out of you daily. For optional. Optional. So, फिर 5 घंटे, then 3 घंटे की GS की क्लास, 2-2.5 घंटे की ऑप्शनल क्लास. कैसे करोगे? The better suggestion is, if feasible, pause GS coaching because you have the video access for, I guess, a year or so. Yes. So 1 year. You can do it that way. Right now, if it is, then you can do, but make sure कि multiple it's not going on. ठीक है ना? तो डबल क्लास जब हो जाती है 3 क्लास तक ले लेते हैं यार, तो मतलब क्या करें? Deepak is asking, can you talk about library reading room? Yeah, reading room is there at our institute, first floor. You guys are welcome to visit. And the timing for that is 8 in the morning to 8 in the evening. Okay. All you have to have is an iCard with you and maintain the decorum. And stop eating chewing gum. We have banned chewing gums because people were ill-treating it quite. So these are the requirements. Scholarship test. देखो, we have no such option, but तुम्हें लगता है if I interact with you and I see a spark in you, I'll definitely like to encourage you. That has to be a rigorous interaction. You can pay in 2 installments, half at the time of admission and half in 30 days. That way you can do. Is it not going to do? Barsha, you can do after BSc only if your target is not pursuing any MSc option. But if you are looking for any sort of job security, the question that she asked was whether I should do MSc before starting UPSC preparation or not. You have to be aligned with your career goals. If you're looking for preparing a backup by doing MSc, then maybe yes. But if you are totally focused on UPSC, you can start right now. Okay. We have to pay extra for this.
जो जितना देना है दे दो यार. I just told you that fees one time payment is there. Anytime. No, I have people from 2018, 2019 who are still using it. Okay? So once you join the coaching issue, Vaids ICS, you are a part of the family. उसके बाद तो I take care of everything. Sometimes even I have to go and speak to landlords also if they are becoming. छोड़ो बात की बात है. But you guys are like family. कभी जरूरत पड़े घर आओ, अच्छी चाय बनती है हमारे यहाँ. ठीक है. For online, will it be the same class timing? Yeah, the class timing will be same, and it will be live. WhatsApp पे ग्रुप होगा. WhatsApp नहीं यूज करते तो ऐसा करना, घर में किसी का और को नंबर दे देना, वो आपको कंटेंट फॉरवर्ड कर देंगे. टेलीग्राम या वीचैट, एनी अदर सोशल मीडिया जो भी आप यूज कर रहे हो, डू दैट. ठीक है. And get it mentioned to the staff that I have 2 numbers calling in WhatsApp, so that if you are to be reached out. So is that all? We have Megha. Sir, can we shed some light on video replaying facility available on online batch? Yeah, have you seen these pay on demand movies? Tata Sky और इस सब में चलता है जो. That you request a movie, they put it on timing and you can just watch it there. Or just like the replay of a cricket match. It's similar to that. So the class we have like 10 to let's say 12 we'll have a class, then we'll have a break, half an hour, then we'll have a class, then we'll have a break. That way we proceed. The class, the informal conversation that we have in the class are edited and the rest is kept there. Okay, guys, thank you for your attention. I have Megha ma'am over here who would like to interact with you regarding our social issues and governance program. If you guys wish to interact with me or Vaids sir, will be available upstairs, first floor. So some part of GS overlaps with, yeah. Hello, I'm Dr. Megha, and I'm here at Vaids ICS, and I teach GS1, Indian Society, and GS2, Social Justice and Governance. Okay, so the reason this part is taught with anthropology is because it will strengthen your understanding of anthropology and vice versa. There's a lot of overlap क्योंकि ये जो part मैं पढ़ाती हूँ ये sociology का part है. Okay, everything related to sociology I teach in your GS. So GS1 में से आपका 75 marks का I'll be teaching you, and you can see in front of you the syllabus. Sir एक syllabus मुझे भी देना जरा. यहाँ board पे लगा दो ना संतोष syllabus लगा दीजिए. So if you look at the syllabus, I have given the copy to offline students. The online students can see the syllabus here. Okay. So first of all, let me just, I'm visible, yeah. Let me just give a proper introduction to myself. I'm Dr. Megha Channa, and I have a PhD from Faculty of Management Studies, Delhi University, and a MA Sociology from Delhi School of Economics. Okay, so I'm very well qualified to teach you sociology and even some parts of social anthropology. और इनमें काफी ज़्यादा overlap भी है, ठीक है? So in Indian society, the syllabus is just coming. संतोष जी लगा दीजिए syllabus.
So seminar से पहले just let me go over the syllabus. ये ना finder देखो. So here now the syllabus is in front of you. Sir इस पे focus कीजिए जरा. वो हटा सकते हैं जो आ रहे हैं black में नाम. So you see my lectures are a total of 14 lectures, 2 hours each, duration is 2 months. This part you can easily do with anthropology. बहुत heavy GS की coaching ना लेके अगर आपको GS का 150 marks like GS you know is 1000 marks right, 850 marks अगर आप अलग से करो, जैसे ethics की coaching ले लो, history geography खुद कर लो, no need for coaching for geography and history, do it yourself, it's quite easy. ठीक है, सिर्फ memorize करना होता है उसमें, material है. This part requires coaching, I'll tell you why. So, and this is, I've given my number, WhatsApp number, UPI number, everything. And this course of ours is offered with Anthro. Okay. So you can take it separately also, but better to take it with Anthro. इसमें जो फर्स्ट आपका टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत हेविली एंथ्रो से ओवरलैप करता है. ये देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं: कल्चर, सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीकल्चरलिज्म, प्लूरलिज्म, sources of pluralism, threats to pluralism. Then you have diversity of caste, जाति, वर्ण, social hierarchy. सारा आप एंथ्रो में भी करोगे, बट यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करोगे. यहाँ जीएस में क्वेश्चंस अलग टाइप के आते हैं, एंथ्रो में अलग टाइप के आते हैं. एंथ्रो में ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. एंथ्रो में होगा कि डिफाइन नॉर्म्स एंड वैल्यूज या डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशंस. इसमें अप्लाइड क्वेश्चंस आ जाएंगे. जीएस इज मोर ऑफ अ अप्लाइड. ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं आएगा जीएस में. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर नेवर आस्क्ड इन जीएस. थ्योरी कभी नहीं आती है. कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट वो एप्लीकेशन वाले आते हैं. यू हैव लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी, देन रिलीजियस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ सेक्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. फिर पूरा विमेन का जो टॉपिक है, ऐसे बहुत बार विमेन से आता है, तो यहाँ से आपको ऐसे के लिए मटेरियल मिल जाएगा. जैसे फेमिनिज्म क्या होता है, पेट्रियार्की क्या होता है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जो विमेन का पूरा है. जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन उसके प्रोविजंस हैं या लॉ में प्रोविजंस हैं, वी विल कवर ऑल ऑफ दोज. एंड विमेन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन वी विल डेफिनेटली कवर जो मैं अभी कर रही हूँ अपने पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, दैट इज डेमोग्राफी. डेमोग्राफी प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है. डेमोग्राफी इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. सेंसस, पॉपुलेशन स्टडीज, स्टेट वाइज डेमोग्राफिक फैक्ट्स, मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस सिंस इंडिपेंडेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सारे इश्यूज हम कवर करेंगे. माइग्रेशन, माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी में बहुत बार ये सारे मेंस के क्वेश्चंस होते हैं जो आएंगे. पॉवर्टी, पॉवर्टी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो पॉवर्टी का पूरा प्रिपेयर करना है आपने. मेंस में GS1 GS2 में दोनों में पॉवर्टी आता है. वी विल कवर ग्रेट डिटेल पॉवर्टी. इनफैक्ट आज मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन कराऊंगी, पॉवर्टी का ही करेंगे. ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपका नीति आयोग का जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, प्रोग्रेस ऑन पॉवर्टी, गवर्नमेंट स्कीम्स, फार्मर सुसाइड्स एक्सेट्रा. फार्मर सुसाइड्स अगेन, ट्राइबल अनरेस्ट के भी, ट्राइबल डिस्ट्रेस के जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही जीएस में क्वेश्चंस फार्मर्स पे आ जाता है. ठीक है. Then you have urbanization, problems, remedies. Okay, problems associated with urbanization, impact of urbanization on women, on family, on caste, solutions to urban problems, effects of globalization on Indian society. Globalization अपने आप में एक टॉपिक है, GS1 में तो हर साल आता ही आता है. Okay, then you have communalism, regionalism, secularism. आपको पता है आजकल secularism पे बहुत ज्यादा, communalism पे बात चल रही है. The sample question which I have just covered with my students की argument for and against CAA, Citizenship Amendment Act, जो 2019 का है. मोस्ट लाइकली आप लोग जब तक एग्जाम दोगे क्वेश्चन आएगा CAA पे, है ना. तो उस टाइप के क्वेश्चंस, NRC CAA हो गया आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस तरह के. एंड ऑल्सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल भी आते हैं सेक्युलरिज्म के. देन GS2 में विल कवर द वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट की जितनी वेलफेयर स्कीम्स है, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. अगेन दिस कम्स इन प्रीलिम्स आल्सो. सो लॉट ऑफ व्हाट आई विल बी टीचिंग यू, आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी उसमें निकल जाएंगे. ओके, सो गुड पार्ट ऑफ प्रीलिम्स यू विल गेट. देन वनरेबल सेक्शंस के लिए कौन से लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज हैं, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज पे 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार मेंस में, मतलब 30 मार्क्स का आ गया था ह्यूमन रिसोर्सेज में. समथिंग विच इवन वी टीचर्स डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ह्यूमन रिसोर्स. और हेल्थ एंड एजुकेशन पे पिछली बार नहीं आया था, हो सकता है आपकी टाइम, व्हेन यू गिव नेक्स्ट ईयर इट विल कम.
So issues related to poverty and hunger, global hunger index, India का G20 का hunger agenda, you know, India had a proper hunger agenda in G20, अभी जो declaration हुई है अगस्त में. Then important as then governance. Governance अपने आप में एक बहुत important topic है. 2 questions governance के आते हैं. Digital governance ले लो, e-governance ले लो. Governance से related questions आते ही आते हैं. So let's go over some of the questions in detail. Okay. Because I do it more like in a, you know, question and answer format. I teach through first I give you, जैसे मेरा जो teaching style है, I give you all the theories, all the, you know, concepts related to a topic. Once we've gone through the theories and concepts, we solve the question and answers. यहाँ पे anthro की तरह वैसे नहीं होता. I mean, I give you questions, but उस तरह से question answer writing और checking नहीं होती है. It is more like discussion based question and answers. Because that much time is, you know, not there for GS, and especially it's 150 marks, anthro 500 marks का है, उसमें आप rigorously question answer writing करते हो, उसमें आप काफी busy रहते हो. So I also cannot do the same level of question answer writing, but हाँ, मैं UPSC के last year 5-10 years के questions लेके I give you model answers, मैं उनके answers देती हूँ और फिर आप भी answers लिख के लाते हो, and we do it in a discussion format in the class. Okay, so now I start my seminar. First, I will explain to you the types of questions asked in GS1 and GS2. See, GS1 and GS2 में 2 तरह के मेंस में questions होते हैं. एक होते हैं the fact based questions, मतलब कुछ facts हैं, उस पे question आ गया. वो काफी easy होते हैं because history and geography and constitution में ऐसे ही questions आते हैं. These come in, ये मैं आपको slides दे दूंगी. If you've given your phone number, Santosh ji will send you the slides, and all online students you will also get the slides. Sir, syllabus भेज दिए online को, सबको भेज दो. सिलेबस सबको भेज दो, जितने भी है ना ऑनलाइन, जिन्होंने भी फोन नंबर दिया है, सेंड देम द सिलेबस. सो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी. अब ऑब्वियसली आप यूपीएससी कर रहे हो, महात्मा गांधी तो आपने प्रिपेयर किया ही होगा, है ना, दैट मच यू कैन राइट. Then what is the Indian regional navigational satellite system? You know, why is it needed? ये geography का question है. Very easy question. अगर आपने ये चीज पढ़ी है तो आप आराम से कर लोगे इसको आंसर. Then define mantle plume and explain its role in plate tectonics. Very easy question again. अगर 12th की भी geography करी है तो ये question तो आप आंसर कर सकते हो. So history, geography के questions काफी straight forward आते हैं, इसलिए वैद सर हमेशा कहते हैं geography से शुरू करो. सबसे easy है geography, क्योंकि उसमें questions घूमे हुए twisted नहीं आते हैं. एनवायरमेंट में आते हैं, GS1 में नहीं आते, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं. ऐसे अब आपने प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स वगैरह पढ़ लिए, वोल्केनोस पढ़ लिए, तो ये क्वेश्चन आराम से आंसर कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट कम्स टू कंसेप्चुअल एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, जिसमें आपको कुछ डिबेट करना है, कुछ आर्ग्यू करना है, प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, वो थ्योरीज पे बेस्ड होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी के जो क्वेश्चन आते हैं आपके GS1 में, वो मोस्टली कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, रीजनिंग्स और इंटरलिंकेजेस पे बेस्ड होते हैं. वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, एंड दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे फैमिली, मैरिज, कास्ट, सेक्ट, रिलीजन, नेशन. लाइक GS1 के अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे ना, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो कुछ जनरल सा क्वेश्चन है. लाइक लास्ट टाइम अ क्वेश्चन केम ऑन चाइल्ड कडलिंग, यू नो हाउ मोबाइल फोन्स आर रिप्लेसिंग कडलिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, और कंपेयर इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द वैदिक टाइम्स, द कास्ट सिस्टम एंड रिलीजन टिल टुडे. Those are actually not general questions. They are based in a very specific concept, that is the concept of social institutions. ये आप एंथ्रो में भी पढ़ोगे. एंथ्रो में शुरू ही आपका ये फैमिली किनशिप मैरिज से होगा. So what are social institutions? Family, marriage, caste. They are basically patterns of behavior that repeat themselves over generations. Patterns of social behavior. मतलब डिटेल में आप पढ़ोगे एंथ्रो में भी और मेरे इसमें भी. फिर सोशल प्रोसेसेस पे क्वेश्चंस आते हैं. इसमें हमेशा GS1 में, you know, in the syllabus you will see these topics given: globalization, urbanization, poverty, pluralism. ये सारे टॉपिक्स हैं सिलेबस के. बट ये हैं क्या? ये होते हैं सोशल प्रोसेसेस. You see why they have given globalization, urbanization, poverty and all, ये सब प्रोसेस होते हैं. फिर सोशल ग्रुप्स जैसे विमेन, दलित, एल्डरली, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, ट्राइब्स वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं. फिर सोशल थ्योरीज पे आते हैं, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, मार्क्सिज्म एक्सेट्रा. ओके, so let us go over some of the questions that have come in the past 5 years. Debate the issue of whether and how, so this is one question I'm taking up. Debate the issue of whether and how contemporary movements for the assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste. इस तरह के questions आते हैं. सबसे पहले तो आपको डिबेट करना आना चाहिए कि प्रोज एंड कॉन्स कैसे. क्वेश्चन शुरू ही हो रहा है डिबेट वर्ड से. फिर कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स फॉर असर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी. दलित कौन है, उनकी क्या मूवमेंट्स थी? आदि द्रविड़ा मूवमेंट, नाम शूद्र मूवमेंट,
महाराष्ट्र पैंथर्स मूवमेंट, फिर बहुजन समाज पार्टी की, बीएसपी की, सबने सुनी होगी, काशी राम की मूवमेंट। देन और उनसे क्या कास्ट सिस्टम खत्म हो गया उन मूवमेंट से, या उसको बढ़ावा मिला है? ये आपको डिबेट करना है, एनालाइज करना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस इतने इजी नहीं होते। इनमें ये नहीं कि आपने कुछ फैक्ट्स लर्न कर लिए और लिख लिए, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कास्ट सिस्टम की, और खासकर उसमें जो दलित्स की पोजीशन है उसकी। ओके, दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच आई टीच यू। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाती हूँ, ठीक है, एंड नथिंग इज लेफ्ट आउट, एंड ऑल माई प्रीवियस बैचेस एंड स्टूडेंट्स टेल मी, अच्छा मेरे रिव्यूज पढ़ लेना, वैद्स आईसीएस रिव्यूज पे जाके उसमें से न्यूएस्ट पे सॉर्ट करना, तो न्यूएस्ट पिछले 1 साल के मेरे ही होंगे। You see the reviews the students have given me, almost all have given me 5 stars, and almost all of them has said that the way Megha ma'am teaches, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे जीएस नहीं पढ़ाया जाता है। आप में से कुछ लोग शायद कर भी रहे हो जीएस की कोचिंग, चाहो तो मेरे 2-3 लेक्चर्स में फ्री में आ जाना। I just want a comparison, you know, for my own satisfaction. I'll give you 3 lectures for free. First lecture anyway is a demo lecture, it's for free by the way. Online, offline, everybody please remember, first lecture जो मेरा होगा, डेट आपको वही 23rd April के आसपास, maybe 22nd, maybe 24th, it will be free of cost. Then incident and intensity of poverty are most important in determining poverty. इस टाइप के questions poverty में आ जाते हैं, United Nations multidimensional poverty index. Then how is Indian concept of secularism different from Western concept of secularism? ये बार बार आता है क्वेश्चन, 2 बार आ गया, ये सोशियोलॉजी का काफी टिपिकल क्वेश्चन है। 13 में आया है, 18 में आया है, हो सकता है दोबारा आ जाए। You know, for this you need to understand the evolution of secularism. Then analyze the salience of sect in Indian society vis-a-vis caste, region and religion. इसमें एग्जामिनर ने 3 चीजें लिंक कर दी हैं, सेक्ट, कास्ट, रिलीजन। आपको सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन डेप्थ, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस लाइक दिस। इसलिए जीएस1 जीएस2 में आपने देखा टॉपर्स के भी 50-60% मार्क बहुत ज्यादा नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे इन डेप्थ स्टडी कर ही नहीं पाते। तो आई वांट माय स्टूडेंट्स टू गेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स इन जीएस1 एंड 2 की जितने नंबर किसी के कभी नहीं आए, यू नो, दैट वे। अब ये क्वेश्चन एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने डाला है, आई हैव कवर्ड इट विद माय क्लास, डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। डू यू थिंक इट्स द थ्रेट टू द स्पिरिट ऑफ प्लूरलिज्म एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, these type of questions will come. So here I've solved one question. I don't think we have so much time to go in detail, but incident and intensity of poverty are more important in determining poverty than income alone. In this context, analyze the latest United Nations multidimensional poverty index. Okay, now this question घुमा फिरा के ये किसी ना किसी अलग तरह से मतलब wordings में, पर ये आता है कई बार. Okay, there are some questions which are very typical questions. इसमें जो एग्जामिनर है, ही एक्सपेक्ट्स यू टू नो कि पॉवर्टी सिर्फ इनकम से नहीं डिफाइन होती। इसका ये मतलब है कि अगर आप कम पैसे कमा रहे हो आप पुअर हो, और आप ज्यादा पैसे हैं तो आप पुअर नहीं हो। ये पॉवर्टी की अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी लेवल पे नहीं होती है। इन यूपीएससी यू नीड टू नो दैट पॉवर्टी इज अबाउट दिस हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स। इट इज नॉट इनकम अलोन। सिर्फ जो चरम गरीबी है ना, जिसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, income alone does not reflect the incidence and intensity of poverty, except in case of people who are absolutely poor. मतलब $2.15 से वो लोग कम कमा रहे हैं दिन के, मतलब $2 कितना 160-170 रुपीज से पर डे कम कमा रहे हैं, वो एब्सोल्युटली पुअर होते हैं। उनके अलावा पॉवर्टी एस्टिमेशन में इनकम का क्राइटेरिया कहीं नहीं यूज हो रहा है, नीति आयोग भी नहीं कर रहा है। नीति आयोग ने यही क्राइटेरिया यूएनडीपी का लेके एमपीआई इंडिया में लगा दिया है, राइट? So it is how people experience poverty in different aspects in their daily lives, from access to education, health and living standards like drinking water, housing, sanitation, etc. That is what defines poverty. तो ये सारी डेफिनेशन है, ये उसका पूरा इंडेक्स है। ये मैं स्लाइड्स आपको सबको भेज दूंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, एवरीबडी विल गेट दीज स्लाइड्स. So this is how poverty is determined. Health में nutrition and child mortality are the criteria. Education में years in schooling, ये सारे लिखे हैं, school attendance, standard of living में cooking fuel, ये हमारे नीति आयोग के भी यही criteria है। और इस पे क्वेश्चन बार बार आता है on human development index and the multidimensional poverty index. Okay, और फिर ये इनकी findings हैं, ठीक है, कि क्या है इंडिया में, कितनी पॉवर्टी घटी, कितना, you know. And the examiner asks you to be critical of this, because अभी नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि पॉवर्टी सिर्फ 5% रह गई है। 5% रह गई है तो जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग, मतलब हम बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे हैं। इतना हंगर क्यों है फिर हमारी कंट्री में? जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इंडेक्स है वर्ल्ड का, इंडिया की रैंक 131 है। वी आर बिलो श्रीलंका, वी आर बिलो पाकिस्तान, वी आर बिलो बांग्लादेश।
तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इस कंट्री में इतना कम क्यों है? दैट इज इयर्स ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी, हंगर, स्टंटिंग, ये सब इतने ज्यादा क्यों है अगर हम पुअर ही नहीं है तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में यू कैन क्रिटिसाइज, यू कैन नॉट डायरेक्टली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी. व्हाट यू कैन से इज दैट द सैंपल साइज ऑफ द स्टैटिस्टिक इज लेस. They have based their findings on the National Family and Household Survey, जो कि सिर्फ 6 लाख लोगों को कवर करता है. 6 lakhs is not an adequate sample size to study 1.48 billion की population. So you can say the sample size is small, sample frame is small, सिर्फ 13 या 15 states cover हुई हैं, है ना? Survey questions were not enough. इस तरह से you can critique the Niti Aayog, and that is what the examiners expect you to do. Critique in a way that is positive, not negative. Give a positive critique, give an argument, build an argument. When you are able to do critical thinking, argument building, पहले तो आपको सारे facts, theories और knowledge सारी आनी चाहिए, फिर उसके ऊपर और आपको बैठ के सोचना है. So those are the kind of question and answers I cover in my class. The whole syllabus is covered very much in detail. Those who are doing GS coaching, welcome for 3 lectures and let me know the comparison. Similarly, बड़ा easy सा question था, देखने में बड़ा आसान लगता है. Child cuddling is being replaced by mobile phones. Discuss its importance on socialization of children. अब ये कैसे पता चला कि ये किसी sociologist ने लिखा है? Because he is using the word he or she socialization. This is a concept in sociology. Now look at the amount of concepts that have gone into this question. Social institution कौन सी है? Family. Social group कौन सा है? Children. Social theory कौन सी है? The theory of socialization. इसकी definition होती है proper. And agency of change or social process, modernization or globalization, technology mediator, mobile phones. Normally आप लोगों को किसी social change पे question पूछा जाएगा, जैसे how has the caste system changed since independence till today, या दलित्स की जो social movements थी उन लोगों ने क्या दलित्स की identity को नष्टी, मतलब का आजकल कोई दलित है ही नहीं क्या, ऐसा question है? नहीं है, it is still persisting. So these are the kind of questions. पूरा answer तो अभी discuss करने का time नहीं है. But like socialization is the process of internalizing the norms, values, beliefs and behaviors of a society. ये टर्नर की definition है, ऐसी बहुत सी definitions हैं. So you get proper sociological definitions with references of authors, proper United Nations या World Bank का data या नीति आयोग का data या union budget का. I taught the whole union budget this time to my students. उसके जो main salient points थे, 7 salient points थे, वो मैंने कवर कर लिए थे. Yeah, so anything related to, because I have a PhD from Delhi University in an area overlapping sociology and economics. So I have studied eco also till PhD level. I have studied sociology also, statistics also, because from Faculty of Management Studies इतनी आसानी से PhD मिलती नहीं है. You have to be your SPSS, statistics, you have to know your economics, micro, macro, you have to know your subject, which in my case was sociology. So एक well-grounded, comprehensive coverage आपको काफी सारा मिल जाएगा. इकोनॉमिक्स के भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा दूंगी. लाइक दिस टाइम आई वाज डूइंग गिनी कोफिशिएंट, व्हिच इज द डिस्पर्जन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे हमारा गिनी कोफिशिएंट हाई है, मतलब गरीब लोग बहुत, जीडीपी बहुत हमारा बढ़ रहा है, बट इक्वालिटी नहीं है हमारी कंट्री में. जो गरीब हैं वो ज्यादा गरीब हैं, और जो अमीर, जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है, इट्स इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल. 10% of the people of our country control 77 or 80% of the wealth. You have recently seen जो शादी प्री वेडिंग हुई है ना, तो कितना अनफेयर लगता है ना, कंट्री वे पीपल डोंट इवन हैव फूड टू ईट. लोग मुश्किल से एक टाइम का खाना जुटा पा रहे हैं, वहां पे इस तरह का lavish display of wealth. So these are the kind of questions which you as UPSC students and as future IAS, IPS, IFS officers, you should be dealing with these questions. These is what will come in your exam also, and when you become administrators, जब आप IAS बनोगे तो तब आपके ये सारे मुद्दे आपके सामने आएंगे, फिर आप क्या करोगे उस टाइम पे. तो इनकी एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि गिनी कोफिशिएंट हमारा कितना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अनइवन क्यों है, इनकम का डिस्पर्जन इतना अनइवन क्यों है, और इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. पहले तो आप मुद्दे को समझो, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे. भी एज एडमिनिस्ट्रेटर्स योर एम इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री, राइट. अगर आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होंगी तो आप सॉल्व कैसे करोगे, है ना. तो ये जो सारे सोशल इश्यूज, मेरे कोर्स का नाम सोशल इश्यूज भी इसको कहते हैं. व्हाट आर द सोशल इश्यूज फेसिंग आवर कंट्री? सो दैट इज व्हाट यू विल बी डीलिंग विद in my course. Detailed coverage of the syllabus as well as question and answers, as well as you can write answers, send me on WhatsApp, send me in group. ठीक है, but it is no pressure. You ask my present students, मतलब ऐसा कुछ नहीं. एंथ्रो में तो काफी प्रेशर होता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर राइटिंग. दिस इज 1 to 2 lectures in a week. Tuesday मेरा 11:30 होता है लेक्चर.
My lectures never overlap with Anthro because Antim sir here makes sure the scheduling is done in a way कि मेरा अलग होता है Anthro का अलग होता है तो कभी clash नहीं होता है. Okay, so you can easily attend a comfortable 2-hour lecture once a week or twice a week. ठीक है, 2-2 घंटे के चाहे डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स. कभी स्टूडेंट्स मांगते हैं कि 2 लेक्चर्स कर लो मैम वीक में, मैं 2 करती हूँ. एक कर लो तो मैं एक कर लेती हूँ. लाइक नेक्स्ट वीक इज होली, दे वांट टू गो होम फॉर होली, तो कह रहे हैं एक कर लो मैम, तो मैंने कहा ठीक है मैं एक लेक्चर कर लेती हूँ नेक्स्ट वीक. यू नो इट्स कंफर्टेबल. Very open relationship, again like family. So if you any of you have any questions, you can ask. Otherwise, we'll wind up the seminar. वैसे तो everything is there in the syllabus, and you know, if you want to join, you can let Antim sir know, or you can let me know. मेरा WhatsApp number syllabus पे लिखा ही हुआ है. Okay, so you can just write to me, ma'am, I want to join your course. Any question? फीस कितनी होगी मैम? ठीक है. So should we wind up the seminar? फीस कितनी होगी क्लास की? For first 20 students, the fee will be 5,000. After that, the fee is 10,000. Okay. First 20-25 students के लिए 5,000 होगी fees. It's very reasonable because you know you are doing it with Anthro. तो कोई fees ज़्यादा नहीं है. It's a very reasonable sort of fees which Vaids sir has offered out of his goodwill. मतलब कि इससे आपका काफी Anthro भी strengthen हो जाएगा. For example, last year globalization का question Anthro में आया था. मेरे साथ पढ़ोगे तो globalization आपको crystal clear हो जाएगा. Question आ गया Anthro में. Overlap है काफी. ठीक है. So all the best students. Thank you very much. Okay. So guys, thank you for your time. I hope the session was informative enough. Still, if you have any queries, you can reach out to me on my mobile number 953-800-1600. If in case I end up missing your call, I'll give you a call back. All the best, guys.